Hello viewers, now let's do question number 16, exercise 2.5 polynomials, chapter 2, class 9, mathematics. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below? Volume expression is given to us. We have to again find out the possible expression for the dimensions. In dimension, what will be there? Length, breadth and height. So we need to find the possible expressions for length, breadth and height. So what volume is given to us? 3x square minus 12x. What is common? Just try to take common. So 3x is common here. 3 ones are 3. So 3x into x. 3 fours are 12. So we got we have factorized this 3x x minus 4. So now we can write easily the possible expression for dimensions or length, breadth and height. So volume expression given to us, length, we can write length, breadth and this is height. Volume is 3x x minus 4. Now we can assume anything. We can assume first length as 3. Now if we assume length as 3, then breadth will be x and height will be x minus 4. Now we are going to interchange it. Now let's take length as x, then breadth as x minus 4 and height as 3. Now again interchange. So this time I am taking length as x minus 4, then breadth 3 and the height will be x. So these are the possible expression, children, for length, breadth and height of the volume or dimensions possible expression. This is area expression given to us, volume expression given to us. This is volume expression given to us and we have to find out the possible expression for length, breadth and height, and these are the answers, solutions. Clear, children? Understood? Very easy. Now let's see the second part of it. What is second part? Now see the second one. 12ky square plus 8ky minus 20k. First of all, what is common? 4, 4, 4 and k and k. The 4 is common. Take 4k common. 4 3s are 12. 3y square. 4 2s are 8. K also common. So y left. 4 5s are 20. K also we have taken common. Now after this we have to split the middle term so that we'll get the expressions, more expressions. So middle term split 4k. Now 5 on adding, what we need? On adding we need 2. On multiplying we need minus 5 into 3 minus 15. So can you guess factors? 5 and 3. 5 and 3 are factors. 5y minus 3y. 5 minus 3, 2y. 5 into minus 3, minus 15. Both conditions fulfilled. We have splitted the middle term. Now take common. कॉमन ले लीजिए. क्या कॉमन है दोनों में? y. तो व्हाट लेफ्ट? 3y प्लस 5. यहाँ क्या कॉमन है? -1. 3y प्लस 5. सो क्या एक्सप्रेशन आ गया फाइनली? 4k 3y प्लस 5 कॉमन निकल गया. तो अंदर क्या बचा? y माइनस 1. अब पॉसिबल एक्सप्रेशन लिख देते हैं. किसके? वॉल्यूम के पॉसिबल एक्सप्रेशन लिख देते हैं. यहाँ पे क्या हो सकते हैं? ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हम लेते हैं हाइट. तो पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, व्हाट विल बी द पॉसिबल एक्सप्रेशंस. इफ वी एज्यूम लेंथ 4k ले लेते हैं तो ब्रेथ क्या हो जाएगी? 3y प्लस 5 हो जाएगी और हाइट क्या हो जाएगी? y माइनस 1 हो जाएगी. नाउ इंटरचेंज करते जाइए. 4k तो आप क्या ले लीजिए? लेंथ 3y प्लस 5. हाइट ले लो y माइनस 1. तो ये कितनी हो गई? 4k. वहाँ पर इंटरचेंज कर लो. 4k हो गया, 3y प्लस 5 हो गया तो क्या बचा? y माइनस 1. यहाँ भी ये हो गया तो क्या बचा? 4k. और यहाँ क्या बचा आपका? 3y प्लस 5. सो ये आ गए हमारे पॉसिबल एक्सप्रेशन आ गए लेंथ, ब्रेथ और हाइट के. ये लेंथ हो गए, ये ब्रेथ के कॉलम है, हाइट के. तो ये पॉसिबल एक्सप्रेशन हो गए किसके? लेंथ, ब्रेथ और हाइट के. सो अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो इजी. पॉसिबल एक्सप्रेशंस, possible expressions for length, breadth and height. So in this way we can do these questions. Last question हमने देखा था
एरिया एक्सप्रेशंस के लेंथ तो ब्रेथ निकालने थे, वॉल्यूम वाले में हमें लेंथ ब्रेथ तो हाइट ये निकालने. तो सिंपल यू हैव टू टेक कॉमन एंड मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है तो देन आल्सो यू हैव टू डू मिडिल टर्म स्प्लिट आल्सो. So children, I hope you understood this question number 16, and this completes our chapter number 2 also. So thank you so much for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.